So hi everyone, welcome to my channel. So I'll be taking your biology for Icse class 9 and 10. So today the topic we are going to discuss is circulatory system, and it is the first part of the video. There will be more videos coming soon, so stay tuned. It is a part of unit 3, that is human anatomy and physiology. So the question is, what is a circulatory system? एक circulatory system क्या होता है? So basically the organ system which circulates blood or any other similar fluid to distribute nutrients and to collect waste from our body cells is called circulatory system. Circulatory system का ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि ब्लड को यूज़ करके, ब्लड को सर्कुलेट करके या कोई और सिमिलर बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करके वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और वेस्ट को कलेक्ट करता है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम लोग बॉडी के बाहर भेज देते हैं. सो इस ऐसे किसी सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं. हमारे बॉडी में जो मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम है, और या कह सकते हैं तो एग्जैक्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स. So from here we can get a rough idea about what is a circulatory system. Now we need to understand what are the types of circulatory system, or basically what are the major types of circulatory system that are present in nature. So हमारे सिलेबस में ये दो हैं, तो we'll be discussing about these two. There are two types of circulatory systems. One is the closed vascular system and the other is the open blood circulatory system. ओके कई कई जगह पे लिखा रहता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई कोई जगह में लिखा रहता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. बोथ आर करेक्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो पूरा जो पार्ट है, इसको पूरा लिखें एग्जाम्स में, बिकॉज यू नेवर नो कौन एग्जामिनर के हाथ में आपका पेपर जाएगा और कैसे वो मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. So firstly, we will be discussing closed vascular system. As we know, the blood and other circulatory fluids in our body travel through closed spaces, namely blood vessels and lymph ducts. This type of circulatory system is called closed vascular system. So closed vascular system में क्या बात है कि जो blood या कोई भी जो circulatory fluid होता है वो closed spaces से travel करता है. closed spaces मतलब enclosed जगह, मतलब वन इन है वन आउट, चारों तरफ फैल नहीं जा सकता है वो, ठीक है ना. इसका एक फिक्स्ड रूट रहता है, एक फिक्स्ड रास्ता रहता है, एक फिक्स पाथ रहता है, ठीक है ना. एक क्लोज्ड पाथ रहता है, उसके अंदर से ही वो फ्लो करता है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता है. इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फ डक्ट्स. जब ब्लड वेसल के अंदर से जाता है, वो थोड़ी बाहर निकल जाता है या फैल जाता है या शावर की तरह इधर उधर गिर जाता है, वैसा नहीं होता है ना. वो सीधा उसके अंदर से जाता है और उसके अंदर से जो डेस्टिनेशन है, उसका डेस्टिन्ड पॉइंट है, वहीं पे जाके वो जो उसका काम रहता है वो करता है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम. नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें ब्लड ओपन स्पेसेस से जाता है. वो क्लोज्ड है तो ये वाला ऑब्वियसली ओपन ही होगा, उसका एकदम ऑपोजिट. So in most insects, it is found in most insect, point to be noted. The blood mostly flows through open spaces. Okay, their blood flows through their heart to body via tissue spaces and not any particular vessel or ducts. Such circulatory systems are called open blood circulatory system. Okay, मतलब ब्लड और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसके बीच में जो टिश्यू स्पेसेस रह जाते हैं ना, हमारे बॉडी में भी टिश्यू स्पेसेस रहते हैं, बट वी हैव अ पर्टिकुलर network of blood vessels and lymph ducts and other vessels that transport the body fluid to and fro in our body. Okay, but many insects don't, almost every insect, almost all insect don't have it. Okay, they have what they have, instead of blood vessels or network of or a mesh of vessels, they have open spaces. एंड उसी में ये मतलब एक लिक्विड मतलब फ्लो करता रहता है इधर से उधर. इट गेट गोज टू द हार्ट एंड देन अगेन सर्कुलेट्स बैक इनटू द बॉडी. ओके, सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर कॉल्ड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाई डू वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए ज़रूरत है? बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के भी तो चल जा सकता था ना. ऐसा दिमाग में कभी आया होगा, मेरे दिमाग में तो आया था. ये ज़रूरत ही क्या है, नहीं रहते एक झंझट कम रहता, नहीं ना. तो
वाई डू वी नीड, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. This is the most important cause why we need a circulatory system. Okay, all organisms including humans need a kind of distributing systems to distribute essential nutrients and sources of energy to various parts of the body. Okay, जो हम लोग खाना एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, उससे जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उसको तो कहीं पे तो हम लोग को भेजना पड़ेगा. कहाँ भेजना पड़ेगा? टिश्यूज़ को भेजना पड़ेगा. द टिश्यूज़ दैट आर इन नीड ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो जो फूड या वो जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करेंगे टिश्यूज़ या सेल्स, उससे वो लोग एटीपी बनाएंगे. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. उस एनर्जी को ही तो वो यूटिलाइज करेंगे अपने फंक्शंस में, अपने वर्क्स में, राइट. सो फॉर दैट वी नीड अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम. ओके, लाइक यू कैन कंसिडर सर्कुलेटरी सिस्टम एज एन कैटरर. ठीक है, खाना तो भेजना पड़ेगा ना टेबल से टेबल तक. ओके, बुफे सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे. तो दिस इज अ वी नीडेड अ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम टू distribute the essential nutrients and sources to the various parts of the body. And also we needed a collecting system to collect the waste produced by various kinds of cells and later on get rid of it. How do we get rid of it? We get rid of it through the excretory system. Okay, this is where we need a circulatory system, or this is where a circulatory system comes into play, where the fluid, let's take the example of blood, does both distribution of fuel and collects waste to and from our body cells. This is one of the prime reasons we need a circulatory system. So where do we need a circulatory system, and also what are its function? So firstly we come to the digestive system. We need a circulatory system in digestive system. Why? The nutrients from the digested food are absorbed and then transported throughout our body with the help of the circulatory system. It's very simple. Okay. Next we need in respiratory system. So in respiratory system, the oxygen absorbed by the blood through the lungs is transported to the various cells, whereas the CO2 produced by the cells is absorbed and carried to the lungs for giving it out. Okay, from breathing it out. Okay, तो ब्लड क्या होता है, जब ब्लड एक्सचेंज होता है ना पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन से जाके जब एक्सचेंज होता है लंग पे, तो वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होके आता है. ठीक है. ओके, तो यही रीज़न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी रहता है बॉडी सेल्स के लिए, बॉडी टिश्यूज़ के लिए. सो वी नीड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम we need a circulatory system in respiratory system. So next we come to the where we need the circulatory system in excretory system, where the all the excess of water, excess of salt and nitrogenous waste is transported by the blood to get rid of. Okay, अब इतना कुछ हम लोग खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं. ठीक है, KFC हो गया, जिंगा बर्गर हो गया, वाव मोमो. ओके, सो ये सब जो हम लोग खा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें, हाँ ऑल्दो दे आर जंक फूड, बट उसमें भी कुछ रहता है. ऐसा नहीं कि सब जंक रहता है, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी रहती हैं. तो वो जो अच्छी चीज़ें रहती है वो हम लोग, हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. Our digestive system absorbs the nutrients from those foods and the rest is left to get excreted out. Okay, the leftover is left to get excreted out. It can be excess of water, it can be excess of salt, it can also be sometimes undigested food if you are ill. Okay, nitrogenous waste. So the what does the blood do? The blood absorbs it. Okay, बिफोर दैट यू माइट हैव अ कन्फ्यूजन कि वो तो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ऑटोमेटिकली होके जाता है. येस ऑफ कोर्स, बट सेल्स में जो अनकंज्यूम्ड रहता है ना, अनकंज्यूम्ड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो भी क्या होता है, ब्लड उसको भी कैरी आउट करता है. ठीक है ना, ब्लड उसको भी लाइक ले लेता है साथ में कि चल एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुमको छोड़ देंगे हम लोग. ठीक है, तो जो सेल्स जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो टिश्यूज जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड क्या करते हैं उसको भी कैरी करता है. That can be in the form of excess of salt and also nitrogenous waste. Okay, or it can be the form of excess of water. So blood carries these kinds of waste from the cells and tissues in our body and deposits them. I'm using the word deposit, but it's not actually depositing. Okay, it transports them. We can use the word transport. It transports them to the excretory system to get rid of. So next we move to the endocrine system. So this is important.
And about endocrine system, we'll be studying more in detail about it in later videos. So here the blood carries the essential hormones secreted throughout the body, and they act wherever they are required. It's very simple. Okay. During our growth, when a baby grows to a adult, from a teenage to an adult, okay. So in this process, we are growing. There are various stages of hormonal changes. Okay. During these hormonal changes, our brain secretes, not actually the brain. Okay, but basically the brain commands to secrete various hormones. Okay, these hormones are secreted into the blood. Okay, and they have a target area or target location where they have to act upon. So this hormone is carried to the target location by the blood, and they act whenever and wherever they are required. Okay, so this is the need of circulatory system in endocrine system. Okay, and another note to be taken, these functions are not performed singly by the blood. These functions are performed both by the blood and the lymph present in our body. So here we have a diagram representing blood and lymph in our body. Okay, now we'll be studying about fluids present in our body. Okay, so there are two types of fluids present in our body: circulating fluids and non-circulating fluids. Yes, there are two types of fluids. Circulating fluids, the fluids that are circulating throughout our body, whereas there are some fluids that are still, that do not move. Okay, those fluids are called non-circulating fluids. So firstly, we'll go through the circulating fluids. So, firstly, we have the blood contained in heart and blood vessels. Then we have the lymph contained in lymph ducts or lymph vessels, and lymphatic organs like spleen, tonsil. Okay, spleen, tonsils, we have lymph. Then we have the tissue fluid, the fluid between the tissue that keeps on moving, occupying spaces between tissues and organs. It keeps on moving. Okay, and there is no particular direction about it. Now we have the non-circulating fluids, which includes the synovial fluids present in skeletal cavities. Okay, we have the vitreous humor and aqueous humor inside the eye. So key points to remember about blood: it's never stationary. It's always in motion from heart to arteries and back through veins. Now color: it's thick fluid, dark red when taken from a vein. As I told you, vein contains deoxygenated blood. So when taken from a vein, it colors dark red, and bright red when taken from an artery because it's oxygenated. Now volume: average adults have 5 to 6 liters of blood. Just remember the quantity. Now taste: the taste of blood is saltish. Okay, perhaps the reason of the taste is due to the high slight alkaline nature of the blood. Okay, blood is alkaline in nature and the pH varies from 7.3 to 7.45. Okay, below 7 is acidic. Okay, above 7 is alkaline. So due to the slightly alkaline nature of blood, it tastes saltish. And also remember the pH, it varies from 7.3 to 7.45. Next, here we have the main functions of the blood. Okay, so transportation and protection, these are the two main and important functions of the blood. Okay, so firstly we'll talk about transportation of oxygen. As we know, we have covered it in the point where we need circulatory system and respiratory system. Then we have transport of carbon dioxide in respiratory system. Okay, transport of digested food, transport of excretory material, distribution of hormones, distribution of heat. Now, the second most important function of blood is, or the second major important function of the blood is protection. Okay, that is clotting of blood, coagulation. Okay, engulfing bacteria that might have entered our body. So, what is coagulation? It is clotting of blood when we get hit by something, or when we get our fingers cut, or when anything like injury happens and there is a chance of blood coming out. You will see that after some time the blood will stop coming. It won't just keep on flowing down until you're empty. You're not a water bottle, you're not a Bisleri. Okay, you're a human being. So blood will start clotting inside. Okay, and it will clot the area of leak or area of leakage. Okay, this process is called coagulation. We'll be studying in detail about it in the coming videos. Okay, now we have engulfing bacteria that might have entered the body. Okay, produces antitoxin and antibodies to neutralize toxins and kills the germs that might have entered the body.
So clotting of blood is mostly done by the RBCs, okay. And the second and third point, engulfing bacteria and production of antitoxins and antibodies, it's basically done by the WBCs, okay. So these are the two major functions of blood. So this is all, okay. I'll come back with another video as soon as possible, and I'll share it in my channel. Please like it, share and subscribe. I hope I'm able to like help you all with this, and I'm able to explain all the points clearly. And if there are any suggestions, I'll leave my email. Please do mail me about any suggestions you want, any books you want to follow me in particular. Okay, right now I'm following concise biology class 10, I guess. Yeah, I'm following concise biology, which is stipulated by the Icse syllabus. Okay, so if you want to like take a practice test or something like that, do tell me. When I'm completed my circulatory system, the entire chapter, I'll do take a live test with you all. Okay, so till then, take care. Bye bye.